Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Namaskar and welcome to this Monday edition of Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic news of the day. And friends, today we shall also be taking calls from you on any queries that you may have on economic, business and stock market news. But please do remember that we do not address company-specific queries. Well, you may call us on the numbers 23314444, 23717106 and 23421050. If you're calling us from outside Delhi, please do not forget to add 011 as a prefix to these numbers. I'm your hostess Lalima Aneja Dang, and with me is my co-anchor in Hindi, Vibhuti Mishra. धन्यवाद लालिमा जी। नमस्कार श्रोताओं, मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है, जहां हम ताज़ा आर्थिक खबरें आप तक लाएंगे। आज सोमवार है और हम आपके सवाल भी सीधे कार्यक्रम में शामिल करेंगे। आर्थिक, व्यापारिक और शेयर बाजार से जुड़े किसी भी विषय पर आप प्रश्न पूछ सकते हैं। यहां बता दें कि कार्यक्रम में किसी कंपनी विशेष या स्टॉक के बारे में जानकारी नहीं दी जाती है। हमारे 3 टेलीफोन नंबर्स हैं 2331434423717106 और 23421050 पर फोन करके आप सवाल भी पूछ सकते हैं। दिल्ली से बाहर के श्रोता इन नंबरों से पहले 011 अवश्य डायल करें। सवालों के जवाब देने और चर्चा के लिए आमंत्रित हैं आर्थिक विश्लेषक शिशिर सिन्हा। शिशिर जी नमस्कार, आपका मार्केट मंत्र में बहुत स्वागत है। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे पहले हेडलाइंस के साथ हैं लालिमा नेजा डेंग। Dhanyavad Vibhuti ji. Yes, the headlines first. Retail inflation in the country eases to 25-month low of 4.25% in the month of May. IIP rises to 4.2% in April. Prime Minister Narendra Modi calls for use of technology to bridge data divide across the globe. And Sensex gains 99 points to close above 62,700 level. Nifty settles over 18,600 mark. 4.25% के साथ मई में खुदरा मुद्रास्फीति 25 महीने के निचले स्तर पर। आईआईपी में अप्रैल में 4.2% की बढ़ोतरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरी दुनिया में डेटा डिवाइड पर नियंत्रण के लिए प्रौद्योगिकी की सहायता लेने की अपील की। सेंसेक्स 99 अंक की बढ़त के साथ 62,700 के स्तर के ऊपर बंद। निफ्टी 18,600 अंकों के साथ बंद। और सबसे अहम खबर आज की, Retail inflation based on the Consumer Price Index CPI eased to a 25-month low of 4.25% in the month of May this year. Inflation in April had stood at 4.7%. The inflation has fallen mainly due to the easing of food prices such as cereals and vegetables, as well as lower energy prices. As per the Ministry of Statistics and Program Implementation data released today, the Consumer Food Price Index CFPI last month dropped to 2.91% from 3.84% in April. The rural inflation stood at 4.17% in May, while urban inflation was at 4.27%. The government had mandated the central bank to maintain retail inflation at 4% with a margin of 2% on either side. The industrial output of the country rose to 4.2% in April this year. According to the Ministry of Statistics and Program Implementation data released today, the Index of Industrial Production, IIP, expanded as the manufacturing sector's output grew 4.9% in April, while mining output rose by 5.1%. Power generation declined by 1.1% in April. Factory output measured in terms of the IIP grew 6.7% in April last year.
So, Shishir, welcome to our program. And this is some news that retail inflation in the country has eased to a 25-month low of 4.25%. Some amount of inflation is necessary. Is that how it should be? Are we comfortable? At this moment, when we are talking about growth rate of 6% plus or 7% plus, we need an inflation rate of something around 4 to 4.5%. Why we need inflation? Because that will give a virtuous cycle. What does it mean by virtuous cycle? Means when the companies are earning profit, then only they will be able to deploy more capital, more expansion will be there, more employment will be there, people will have more money in their hand, and this will create a kind of what we call as a production cycle. So inflation, for the time being, we need some inflation. It is not good to say that inflation should be zero or there should be deflation. Both are very bad thing for the economy and especially for the emerging economy. Now the important thing is that we are at 25-month low, which is 4.27% in the month of May. This means that when the Monetary Policy Committee will meet again in the month of August, they are likely to continue the pause. That means we should not see any kind of rise in the interest rate either on our deposit or on the loan. That is what we are expecting for the time being. At the same time, some of the banks have already started reducing the interest rate on deposits. That's not a good news, but that's a reality. Why they are doing so? Because the deposits are already so costly. And when you are not earning money on your loan, it is not possible to provide interest rate for that. So, lower inflation is a mixed one. Sometimes you feel that why there is a lower inflation, especially when you are a depositor, but when you are a borrower, you feel very happy. Absolutely. So it's a bit of a paradox there. Well, we are now joined by Gopal from Mumbai. Ji Gopal ji, सवाल पूछे. जी मार्केट टीम का नमस्कार. नमस्कार जी. सवाल एक्चुअली जीएसटी, स्टेट जीएसटी, सेंट्रल जीएसटी, ये जो बिल में लेने पड़ते हैं नंबर, तो सर एक्चुअली मैंने जो मैन्युफैक्चरिंग चालू किया है छोटे पैमाने पे, लिक्विड फ्लोर लिक्विड ये बनाने को चालू किया है, तो मैं ये स्कूल और मॉल्स में जाके ऑर्डर लेने की कोशिश कर रहा हूँ. तो लोग बिल मांगते हैं, तो बिल में मेरे को क्या लगेगा, जीएसटी का नंबर लेना पड़ेगा या स्टेट जीएसटी का नंबर लेना पड़ेगा? तो ये कैसे, कुछ बता सकते हो कैसे लिया जा सकता है? देखिए गोपाल जी, अगर आपका खुद का काम है तो जो जीएसटी कानून के तहत जो थ्रेशोल्ड है वो 40 लाख अगर आप सामान का उत्पादन करते हैं और सेवा मुहैया कराते हैं तो 20 लाख रुपए का है. तो अगर आप, चूंकि अगर आप, मैं समझ पा रहा हूं कि आप महाराष्ट्र से हैं और अभी आपने खुद कारोबार शुरू किया है, तकनीकी तौर पर 20 लाख रुपए से कम कुल कारोबार होने पर आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेने की अनिवार्यता नहीं है. लेकिन इससे फायदा ये होता है कि जब कभी भी आप किसी बड़े काम में लगते हैं या बड़े ऑर्डर आपके पास आते हैं और वहां पर आपसे जीएसटीएन मांगा जाता है, क्योंकि उन कंपनियों के लिए इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम करना एक अनिवार्य है और वो तभी संभव हो पाएगा जब आपका जीएसटीएन वहां पे हो. तो अगर आप जीएसटीएन ले लेते हैं तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है. कई तरह की सुविधाएं हैं, जैसे अगर आप कॉम्पोजिशन स्कीम में जाते हैं, मतलब कि आपका टर्नओवर 1.5 करोड़ है, तो वहां पर उस सूरत में आपको 3 महीने में एक बार रिटर्न फाइल करना पड़ता है और आपके अपने रसीद नंबर पर जीएसटीएन देना होता है, लेकिन आपको कोई जीएसटी वसूलने का अधिकार ग्राहकों से नहीं होता है. अगर आप एक सामान्य प्रक्रिया में हैं तो आप ग्राहकों से जीएसटी ले सकते हैं और ये सारी प्रक्रिया जो है वो ऑनलाइन है. अगर आपको रजिस्ट्रेशन लेना भी है तो आपका आधार और पैन, इन दोनों के जरिए आप जीएसटीएन की वेबसाइट पर जाकर के आप अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं. All right, Shishir, our report says rural inflation stands at 4.17 or stood at 4.17% in May, and urban inflation was at 4.27%. Inflation includes the inflation on food products, which means the farmers as a stakeholder is involved. Again, rural inflation at 4.17, your comment, and urban inflation at 4.27%. In fact, rural inflation has slowed down much faster than the urban inflation. What does it mean? It means that the price level in the rural area, not just of the food product, but also of the other products like clothing, footwear, fuel, fuel, of course, we should not include here because the prices have not been revised.
But if we talk about the food inflation as well as the clothing and footwear, that has come down more in rural area than in comparison to the urban area. This is the trend we are seeing. And urban area, the inflation is slightly higher. It's a normal thing. It's an obvious thing. There's nothing unusual in that. The only thing is that the slower down in the urban inflation is not that as fast as we have seen in the rural area. Had that been the situation, the headline inflation might have gone below 4%. Is it good news to have rural inflation at 4.17? At this moment, 4.17 is a good number in terms of what I said to you about the virtuous cycle. That is critical. We need to keep in mind that we need some inflation. It's not good to always think about that there should not be inflation or very low inflation. Then the producers will not be encouraged to produce. Even the farmers are not getting... Yeah, I had farmers in the focus. Exactly. And there we have to wait for the WPI number, which will be out a day after. There we will have to see what kind of food inflation, what we call as the producer inflation. ओके इसी बीच बेंगलुरु से हमारे श्रोता हैं एनआर प्रसाद जी, अपना प्रश्न पूछिए। हाय, गुड इवनिंग मार्केट मंत्रा। दिस इज एनआर प्रसाद फ्रॉम बैंगलोर। 2 questions. First one related to income tax filing. See, for the financial year 2022-23, my short-term capital gains is more and the long-term capital is less. So can I excess of short-term capital gains, can I set off against the long-term capital? My second question is, although Sensex today up by only 99%, but some of the IT sector stocks rallied today. So can we buy more of IT sector or book the profit now itself? Thank you. Let me begin with the second question first. When you are talking about the stock market, of course, IT sector rallied because of the one basic reason is that US things have settled down and we are not going to see any kind of problem in terms of the debt repayment, at least for a year. So that is good thing and that is what giving a hope. The other thing which is still a concern that European nations are not in a very good economic health. So that means the outlay for IT sector spending will be lesser. So at this moment, if you have IT stocks, my advice would be to go and book the profit if the market is up. Now coming to your first question, can you set off your long-term capital gain or loss, if I understand correctly, against the short-term gain? If you are a businessman, of course, there is a possibility of setting off. There's nothing, no problem. But the rate of, if you talk about both the gains, short-term capital gain as well as the long-term capital gain, you know that the short-term capital gain, especially in terms of equity, the rate is 15% and the long-term capital gain tax is 10%. So there in terms of gain, I have to look after the exact provision, but in terms of loss, of course you can set off. Right. We have P. Prajapati ji who's calling us from Delhi. Yes, you may ask a question, please. Ji. Hello. हेलो। हाँ जी, सवाल पूछें जी। जी नमस्कार जी। नमस्कार जी 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 जी। हाँ सर, जैसे 2000 के नोट वापिस बैंक में जा रहे हैं, सरकार ने वापस ले लिए, क्या सरकार इससे भी बड़ा नोट लाने का कोई विचार रख रही है या दोबारा 1000 के नोट छपने की उम्मीद है? और दूसरा सवाल मेरा ये है कि एफडी के इंटरेस्ट रेट बढ़ने के कितने चांसेस हैं और गोल्ड पे कितना और रेट बढ़ने के और घटने के चांसेस? 3 सवाल। थैंक यू। देखिए, अगर मैं शुरुआत करूं सोने से, तो एक बात आप याद रखिए कि जब तक वैश्विक स्तर पर उथल-पुथल ना हो, अनिश्चितता ना हो, तो सोने के भाव नहीं बढ़ेंगे। ये आपको सुनने में अजीब सा लग रहा होगा, लेकिन ये हकीकत है, क्योंकि सोने के भाव तभी बढ़ते हैं जब आपको अनिश्चितता ज्यादा दिखती है। तो अभी के समय में सोना एक सामान्य स्थिति में चल रहा है, इनफैक्ट कुछ जगहों पर घाटा भी हुआ है। दूसरा सवाल आपका एफडी का है, तो यहां भी मेरे आपके लिए बुरी खबर है कि इसमें अभी ब्याज दर में बढ़ोतरी के आसार नहीं है, बल्कि कुछ बैंकों ने तो इस पर घटा भी दिया है। और तीसरा जो आपका सवाल था 2000 का नोट का, देखिए कानून ये कहता है कि आप 10,000 रुपए तक का नोट छाप सकते हैं, लेकिन अभी की आपकी जरूरत नहीं है। जब आपने 2000 का नोट बंद कर दिया तो उससे बड़े कीमत की नोट लाने का कोई जो है उसका औचित्य नहीं बनता है।
और अब तो ये भी चर्चा चलने लगी कि 500 के नोट की भी जरूरत क्या है। तो खैर मैं इस जैसे कहा जाए कि स्पेकुलेशन में या किसी भी तरीके के अटकलबाजियों में नहीं जाना चाहता। आपसे सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि फिलहाल तो हमें कोई संकेत नहीं मिल रहे हैं कि कोई नया जो है वो नोट बाजार में आने वाला। वाराणसी में G20 की बैठक चल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि विश्व में समान रूप से डेटा उपलब्धता के लिए प्रौद्योगिकी की सर्वसुलभ बनाना महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि डिजिटीकरण से भारत में महत्वपूर्ण बदलाव आया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि विश्वसनीय डेटा सार्थक नीति निर्माण, कुशल संसाधन आवंटन और प्रभावी जनसेवा आपूर्ति के लिए महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि प्रौद्योगिकी का उपयोग लोगों को सशक्त बनाने, डेटा तक पहुंच सुलभ करने और समावेशिता सुनिश्चित करने के लिए किया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि अल्प विकसित और विकासशील देशों के लिए विकास प्रमुख मुद्दा है और उन्हें सतत विकास लक्ष्य प्राप्त करने की कार्य योजना के बारे में पूरे विश्व को मजबूत संदेश देना होगा। प्रधानमंत्री आज वीडियो संदेश के माध्यम से वाराणसी में G20 देशों के विकास मंत्रियों की बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि कोविड महामारी के कारण दुनिया के दक्षिणी देशों पर गंभीर असर पड़ा है, जबकि भू राजनीतिक तनावों ने खाद्य, ईंधन और उर्वरक संकट को जन्म दिया है। इन स्थितियों में इन देशों का निर्णय पूरी मानव जाति के लिए महत्वपूर्ण होगा। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर कल से आरंभ हुई विकास मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। यह बैठक कल तक चलेगी। एक और महत्वपूर्ण खबर है। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि 2030 तक भारत और संयुक्त अरब अमारात गैर पेट्रोलियम उत्पादों में द्विपक्षीय व्यापार को $100 अरब तक ले जाने के इच्छुक हैं। श्री गोयल आज नई दिल्ली में UAE के विदेश व्यापार राज्यमंत्री डॉक्टर थानी बिन अहमद अल जायोदी की उपस्थिति में भारत और संयुक्त अरब अमारात व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते CEPA की संयुक्त परिषद की पहली बैठक को संबोधित कर रहे थे। आज की बैठक में CEPA समझौते में हुई प्रगति की समीक्षा की गई। इस समझौते के तहत दोनों देश कई उत्पादों पर व्यापार शुल्क में रियायत देने पर सहमत हो गए हैं। उन्होंने कहा कि वर्तमान में भारत और UAE के बीच गैर पेट्रोलियम उत्पादों का द्विपक्षीय व्यापार $48 अरब का है, जिसे दोनों देश $100 अरब तक ले जाने के इच्छुक है। CEPA की नवगठित संयुक्त परिषद मुख्य रूप से दोनों देशों के बीच सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों, महिला उद्यमियों और स्टार्टअप क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करेगी। जी अगर इसके पहले आप अगर मुझे एक जो प्रसाद साहब जो थे बेंगलुरु से, उन्होंने जो सवाल पूछा था उसमें एक चीज और स्पष्ट करना चाहूंगा कि जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का है और उनका सवाल था कि हम कैसे सेट ऑफ कर सकते हैं, तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का आप लॉन्ग टर्म कैपिटल जो शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस का जो है आप सेट ऑफ कर सकते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से। लेकिन अगर वो पर्याप्त नहीं है तो आप लॉस को 8 साल तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि ये सुविधा व्यवसायी के तौर पर उपलब्ध है, ना कि एक आम उसमें जिसे कहा जाए सैलरीड के पॉइंट ऑफ व्यू से। वो आपके लिए इस बात को ध्यान रखना चाहिए। जी let's go back to inflation, something which concerns the common man. Where do you see this see the economy going from here? Today it's at 4.25%. Where do we see how do we move from here? I mean, what are your predictions? Next 2 months are very critical, especially when we are looking after this El Nino effect on the monsoon. Yes. So that will have some kind of what you can say impact on the inflation, especially on the food prices. We should not forget that the cereal inflation are still in the double digit. Of course, it has come down. The rate of inflation for cereal has come down. The vegetable inflation is in red zone. The edible oil prices are in red zone. The meat and fish prices are in red zone. But the important thing is that the cereals as well as the spices both are in the double digit. In fact, the spices are very high. If you talk about the overall set of numbers, inflation for spices are the maximum one, at the highest level. So now coming to the overall thing that what will happen in next 2 months, the first thing we will have to wait for the monsoon. Of course, we have seen that late onset of monsoon. That means the sowing could be affected. But the good news is that the reservoir level is very good. So that is giving some kind of comfort in the initial sowing.
If the monsoon picks up during the, say, last week of June or the first week of July, there will not be much impact on the sowing. But if it doesn't happen, then of course we will have some problem in terms of the inflation. The other thing is that what kind of geopolitical situation we are seeing. Of course, we know that there is a recessionary situation in Europe. So how long it continues? If it continues for a long, that means our export will be impacted, and that means our manufacturing will be impacted. So there we will have to see that what kind of situation we are going to see in Europe as well as in the US. So these are few elements which we have to keep in mind. But overall, I will say that risks are evenly balanced now. I mean, the good thing is that risks are evenly balanced. If we talk about the upward risk, of course, there are upward risk, or what we call in economics is the headwind risk. There is a headwind risk, of course, but the tailwind push are also there. So one can expect some positive news in the coming months. What are the factors that affect rural inflation? One keeps wondering. So one important thing is that what kind of MSP we are going to give. So we have seen that MSP for Kharif, they have been increased by 5 to 10%. So that will have some impact in terms of rural inflation, but that impact will be just 10 to 15 basis points, not more than that. That is the most important thing. One should not say that because of the MSP, rural inflation will go up. No. The impact will be not more than 10 to 50 basis points. We have to keep in mind, because we also have to keep in mind that whether the farmers are getting good prices for their produce or not. That is also critical at this moment. You say about 6% of farmers only sell at MSP. See, MSP is for maybe at this number, what number you are saying, 6 to 8%, that is the reality, that not everyone is getting. But we should not forget that in India we have 85% farmers who are the small and the marginal one, whose the acreage is less than 2 hectares. Exactly. So for them, the better module or the better model is the cooperative sector. And what we are seeing, that the kind of focus the government is giving on the cooperative sector, development of cooperative sector, providing some kind of storage facility as well as the what you can say local mandi kind of thing. Yeah. All these things will help the small farmers to get good prices of their produce. Otherwise, what will happen? The middleman will buy the produce from the small and the marginal farmer at the prices which are not remunerative. So that will affect their income, and in turn that will affect the overall rural economy. जो खुदरा मुद्रास्फीति है वो 25 महीने के सबसे निचले स्तर पर है। 2 साल से भी ज्यादा का वक्त है। मोटे तौर पे आप इसे किस रूप में देखते हैं? देखिए, खुदरा महंगाई दर के नीचे आने की 2 खास वजह आप समझिए। पहला तो जिसको हम लोग कहते हैं अर्थशास्त्र की भाषा में कि बेस इफेक्ट है, कि आपका जब पिछले साल बहुत ऊंचा हो तो जाहिर सी बात है कि इस साल आपका उस तरीके का नहीं दिखेगा। दूसरी बात यह है कि कुछ ऐसे सामान है, खास तौर पे अगर आप देखें फूड प्राइसेस की अगर आप बात करें, फूड इन्फ्लेशन की बात करें, सभी के दाम घटे हैं। चाहे आप साग सब्जियों की बात करें, चाहे फल की बात करें, खाने के तेल की बात करें, अनाज की बात करें, मीट, मुर्गा, मछली, अंडे की बात करें, इन सब के दाम में कमी आई है। तो वो सब इसका असर दिख रहा है। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर यह है कि जो फ्यूल यानी कि पेट्रोल डीजल की कीमतें जो अभी बिल्कुल अपने स्तर पर बनी हुई है, जो बीते साल मई से हमने इसमें कोई बदलाव नहीं देखा है, इसकी वजह से भी आपके इन्फ्लेशन पर असर दिख रहा है। क्योंकि फ्यूल का क्या होता है, पेट्रोल डीजल का क्या होता है, मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है। अगर आप डीजल के दाम बढ़ाते हैं तो सामान के ले जाने की कीमत बढ़ती है और इसका असर आपके खुदरा महंगाई दर पर देखने को मिलता है। तो एक फैक्टर वो भी है। दूसरा यह है कि अगर आप क्लोथिंग एंड फुटवेयर देखें, इनके इन्फ्लेशन में हमने पिछले कुछ समय में काफी तेजी से बढ़ोतरी देखी थी। इनफैक्ट डबल डिजिट में था कपड़े और जूते की महंगाई दर। अब वो 6.5, 6.7 पे बना हुआ है। तो ये कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जिनको हमको ध्यान में रखना चाहिए। लेकिन मेरे लिए अभी इस समय सबसे बड़ी चिंता है कि मॉनसून की गति क्या रहेगी, क्योंकि मॉनसून हमारे देश के लिए जिसे कहा जाए कि बहुत बड़ी एक जरूरत है, और उस जरूरत में थोड़ी सी भी कमी आई तो आपके कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर असर पड़ेगा। हमें नहीं भूलना चाहिए कि 65% आबादी कृषि के ऊपर निर्भर है। And the fact that the government is investing so heavily in infrastructure, what the trucks would take 6 days now takes about 1.5 days or so. Is that also an effect which is being seen in inflation? Certainly, because the kind of expenditure you have to do on the logistic thing from taking the input from the one area to the factory and taking the finished product from factory to the market, if it
the movement is taking place at a very shorter duration. That means you don't have to spend much on, say, driver salary or on the other expenditure even of the driver. Even fuel for that matter. Even fuel for that matter. So all those things are having some impact on that. So lower logistic cost is certainly going to add value and it will also have impact on the GDP. शेयर बाजार का हाल जान लेते हैं। प्रमुख घरेलू सूचकांक आज मामूली बढ़त के साथ बंद हुए। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में सेंसेक्स 62,700 के स्तर से ऊपर बंद हुआ, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में निफ्टी 18,600 अंक से ऊपर बंद हुआ। वैश्विक शेयर बाजारों के मिले जुले संकेतों से दोनों सूचकांकों में तेजी रही। सेंसेक्स 99 अंक या 0.16% की बढ़त के साथ 62,725 पर बंद हुआ। निफ्टी 38 अंक या 0.21% बढ़कर 18,602 पर बंद हुआ। बीएसई के व्यापक बाजार में मिड कैप इंडेक्स में 0.5% की वृद्धि हुई, जबकि स्मॉल कैप में 0.7% की वृद्धि हुई। Key domestic indices today ended with marginal gains. Sensex at the Bombay Stock Exchange closed above the 62,700 level, while Nifty at the National Stock Exchange settled over 18,600 mark. Both indices rose amid mixed cues from global share markets. Sensex advanced 99 points or 0.16% to finish at 62,725. Nifty added 38 points or 0.21% to end at 18,602. In the broader market at the BSE, the mid-cap index added 0.5%, while the small cap grew 0.7%. In the Sensex index, which is a pack of 30 companies, shares of 20 firms appreciated, while 10 depreciated. Among the top gainers include HCL Technologies, which inched up 2.6%, Infosys jumped 2.1%, and NTPC ascended 1.6%. On the other hand, Power Grid declined 1.3%, while Larsen & Toubro fell 1% and Titan slipped 0.8%. In sectoral indices at the BSE, 17 sectors logged gains, while 3 witnessed losses. The realty and information technology sectors surged 1.5% each, followed by tech, which jumped 1.4%, while telecommunication and oil and gas sectors scaled up 1.1% each. On the other side, capital goods slid 0.5%, while banking and power sectors plunged 0.1% each. The overall market breadth was positive as shares of 2,150 advanced, while 1,575 companies declined. A total of 137 shares remained unchanged. रुपया का हाल जानते हैं। विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 82 रुपये 43 पैसे पर बंद हुआ। विश्व की 6 प्रमुख मुद्राओं की तुलना में डॉलर की मजबूती दर्शाने वाला डॉलर इंडेक्स अंतर्दिवसीय कारोबार में 103.30 पर कारोबार कर रहा था। और एशिया और यूरोप के बाजार का हाल भी जानिए। एशियाई शेयरों में आज मिलाजुला कारोबार हुआ। जापान का निक्केई 0.5%, सिंगापुर के स्ट्रेस टाइम्स इंडेक्स में 0.3% की वृद्धि और हांगकांग का हैंग सेंग 0.1% चढ़ा। दूसरी ओर दक्षिण कोरिया का कोस्पी 0.5% और चीन का शंघाई कंपोजिट सूचकांक 0.1% गिर गया। लंदन के फुट्सी के सपाट कारोबार को छोड़कर यूरोपीय बाजार दिन के कारोबार में सकारात्मक थे। जर्मनी का डैक्स 0.7% और फ्रांस का कैक 0.6% चढ़ा। अंतिम समाचार मिलने तक लंदन का फुट्सी 0.02% की तेजी के साथ कारोबार कर रहा था। And a look at the oil prices. Well, oil prices declined today due to concerns about China's fuel demand growth and increased crude supply from Russia, while investors wait for the U.S. Federal Reserve meeting as they cautious approach to the possibility of yet another rate hike. In intraday trade, Brent crude was trading at $73.25 a barrel. West Texas Intermediate crude price was at $68.51 per barrel when reports last came in. मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में भारत अगस्त के अनुबंध के लिए सोने की कीमतों में आज 71 रुपये की तेजी आई। सोना 59,892 रुपये प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा था। अंतिम समाचार मिलने तक जुलाई अनुबंध के लिए चांदी 85 रुपये गिरकर 73,711 रुपये
प्रति किलोग्राम पर कारोबार कर रही थी। Well, that's all we have for you in this edition of Market Mantra. Thank you, Shishir, for joining us and updating us with your views and reviews. Thank you. And before we close, friends, here's a reminder of the headlines. Retail inflation in the country eases to 25-month low of 4.25% in the month of May. IIP rises to 4.2% in April. Prime Minister Narendra Modi calls for use of technology to bridge data divide across the globe. And Sensex gains 99 points to close above 62,700 level. Nifty settles over 18,600 mark. Well, that's all we have for you. This is Lalema Aneja Dang and my co-anchor Vibhuti Mishra signing off. Namaskar. नमस्कार। Market Mantra.